Namaskar. A warm welcome to you on your YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss on a very important topic from the Know Your Ethics, whether a CA in practice can become director in a company. So before going to start, my request to you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. I have received many queries during the webinar when I was giving the webinars on code of ethics, revised code of ethics. Even after that, received many messages. Can a practicing chartered accountant become director in a company? Director, either it's a whole-time director, managing director, or simplified director, or it's a private limited company or the public limited company. So what's the views of ICI? What's written in the code of ethics? So let's discuss. If we go on the code of ethics, then in first schedule to the Chartered Accountant Act 1949, in clause 11, part 1, it's mentioned in general, a chartered accountant in practice is not permitted, here the word is not permitted, to engage in any business or occupation other than the profession of chartered accountancy. मीन्स अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप सिर्फ सीए प्रैक्टिस ही कर सकते हैं. यू आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन एनी बिजनेस और द ऑक्यूपेशन. बट यस, सम एक्सेप्शन आर आल्सो देयर इन क्लोज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. तो फर्स्ट एक्सेप्शन है ए चार्टर्ड अकाउंटेंट in practice. Here, because we are seeing a chartered accountant can be director of a company. Means आप director बन सकते हैं company, but not being a managing director or a whole time director. कि आप director तो बन सकते हैं, but managing director और whole time director नहीं बन सकते unless he or any of his partner is interested in such company as an auditor. Means अगर आप या आपका कोई partner उस कंपनी में डायरेक्टर है, ऑडिटर है, देन आल्सो यू कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी. अदरवाइज इट्स परमिटेड, यू कैन बिकम द डायरेक्टर आइदर इट्स ए पब्लिक कंपनी और द प्राइवेट कंपनी, यू कैन बिकम द डायरेक्टर. एंड आल्सो सेकंड केस में अगर आपको होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनना है, देन आल्सो you can take the council permission. In that case आप council की permission भी ले सकते हैं, then you can become the whole time and the managing director. And council की permission, two types permissions are there. One is general permitted and second is special permission. So let's see अगर ये जो director है it's a general permitted or the specifically permission. तो ICI clarified so many times, ICI ने भी clarify कर रखा है, a member in practice shall be permitted to be a director. कि आप डायरेक्टर तो बन सकते हैं बट ओनली डायरेक्टर सिंप्लिसिटर. तो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? सो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, तभी हम कहेंगे इट्स द डायरेक्टर सिंप्लिसिटर और उसी की आपको जनरल परमिशन अलाउड है. तो फर्स्ट इज ही इज ओनली रिक्वायर्ड टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग. कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं तो देन ओनली आप बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे एंड यू विल नॉट पेड एनी रेम्यूनरेशन. कि आप उस कंपनी से कोई रेम्यूनरेशन, आइदर से रेम्यूनरेशन और द प्रोफेशनल फीस. कई बार लोग सोचते हैं कि हम रेम्यूनरेशन नहीं ले रहे, प्रोफेशनल फीस ले रहे हैं. नो, ओनली सिटिंग फीस इज अलाउड फॉर द बोर्ड मीटिंग. कि आप बोर्ड मीटिंग करेंगे और सिटिंग फीस लेंगे. एंड थर्ड, ही विल नॉट डिवोटिंग एनी टाइम फॉर द कंपनी only to attend the meeting. कि आपको डे टू डे रूटीन या some other activities to promote that company या उसके administration part पे, it's not allowed. So director simpliciter is only first कि आप board meeting attend कर सकते हैं, आप sitting fees for board meetings you can charge, and the third is not allowed for day to day routine work. Then this permission is generally permitted. कि आपको कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं लेनी. अगर these conditions are fulfilled, then
General permission is allowed, and even this is for the board managed company. And also specific permission is also not required even if the chartered accountant in practice, his relative holds substantial interest in that company. कि अगर आपके कोई रिलेटिव या आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, then also you can become the simpliciter director and no need of specific permission. General permission is allowed. And then in case of promoter या फिर promoter director या फिर subscriber of the MOA and the article of association AOA में, then also general permission is allowed. A member in practice can become the promoter. कि आप किसी भी company, either it's a private limited company or the public limited company, you can become the promoter of that company. Promoter director भी आप बन सकते हैं, even subscriber. और आप subscriber, as a subscriber you can upload your signature on the memorandum and the article of association जो sign करने पड़ते हैं as a subscriber shareholder, आप वो भी कर सकते हैं. Then also no need for any specific permission. Then one more question arise regarding the holding. बहुत से क्वेश्चन आए थे कि होल्डिंग कितनी हो सकती है, 50% से कम या 50% से ज्यादा, कुछ लिमिट नहीं है उसमें होल्डिंग में. नो बार ऑफ होल्डिंग of any number percentage of share of the company. आप 70%, 80%, 90% you have the holding of that company. जिस कंपनी में आप डायरेक्टर्स हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं है एज पर ICI, कोई बार नहीं है ऑन दैट होल्डिंग. सो आप प्रमोटर भी बन सकते हैं, आप प्रमोटर डायरेक्टर बन सकते हैं. यू कैन आल्सो बिकम द सब्सक्राइबर फॉर द दैट कंपनी एंड कैन होल्ड एन नंबर ऑफ शेयर्स उसी के अकॉर्डिंगली. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो and regarding the full-time director or the managing director, as we have already discussed as per clause 11, member in practice not allowed to become full-time director or the managing director of a company generally. कि अगर आपको होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, देन यू हैव टू गो फॉर द स्पेसिफिक परमिशन. आपको काउंसिल की स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड इफ ए मेंबर इन प्रैक्टिस कैन बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर or the whole-time director for a management consultancy firm, consultancy firm or company, management consultancy company में आप whole-time director or the managing director बन सकते हैं. उसमें भी council की direction है. Accordingly, you can run that company and can become the director, managing director or the whole-time director. Otherwise, you cannot become whole-time director or the managing director in a company unless it's specified permission from the council. So, conclusion is that a chartered accountant in practice can become director of a company. किस कंपनी डायरेक्टर बन सकते हैं जो हमें जनरली परमिशन अलाउड है? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. You can become the independent director because independent director is basically for the board meetings and the sitting fees they charge. उसमें कोई routine work they don't allow for the routine work. And also financial statement के ऊपर it's not compulsion कि आपको sign भी करने हैं as a independent director. So you can become the independent director of any company. Then promoter director, director simpliciter जो हमने definition देखी थी, director simpliciter, and also managing director are the whole-time director of the management consultancy firm. So one question in my mind, एक question है, आप please comment box में answer करिएगा. Can a practicing chartered accountant become whole-time director or the managing director? Whole-time director or the managing director in section 8 companies. पहले section 25 होता था. Section 25 of the Companies Act 2000, section 25 of the Companies Act 1956, जिसका अब change होके section 8 of the Companies Act 2013. So जो ये companies हैं इसको हम कहते हैं non profit organization. So in companies में whether a chartered accountant in practice can become whole-time director or the managing director. So my request to you, please answer this question in the comment box, and we'll discuss some other day. Till then, bye bye. And again, my request to you, subscribe to your YouTube channel CS Ansar. We'll come with some other important topic under the series of Know Your Ethics. Thank you very much. Bye bye.